శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ తిరిగి చెప్పాలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా నేను ఒక గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ
सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. திருவேங்கடமுடையானுடைய திவ்ய திருத்தலத்திலே திருக்கல்யாண உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடந்து வருகின்றது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, வெங்கடேசாய நமக என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திவ்ய திருத்தலம் கொண்டல் வண்ணனை கோவலனாய் வெண்ணை உண்டவாயன் என்னுள்ளம் கவர்ந்தானை அண்டர்கோன் அணியரங்கன் என்னமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே என்று இந்த பக்த கோடிகள் எல்லாம் அவனுடைய திருக்கண்களை கண்டு மற்றொன்றினை காணாவே என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அருள் நிறைந்தனாக இப்பொழுது அந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான். திருவேங்கடம் என்று சொன்னாலே அது மகிழ்ச்சிக்குரிய இடமாக இருக்கின்றது. திருவேங்கடம் என்று சொன்னாலே அது ஐஸ்வர்யங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கின்றது. திருவேங்கடம் என்று சொன்னாலே அது பாவங்களை அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. விண்ணுலகுக்கும் மண்ணுலகுக்கும் நடுநாயகமாக எம்பெருமான் குன்றின் மீது இட்ட விளக்காக பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கின்றானாம். அதனால்தான் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு பக்தர்களெல்லாம் கோடான கோடி பக்தர்கள் எழுந்தருளி அவனுடைய அருளை பெற வேண்டும் என்று இங்கே வந்து குவிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थवदे विकनसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेनाभवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् नितान् प्राणानागम्याम्. अस्यां श्रोतो शिवोदाग्नगा भगवत् कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री वैकार्तकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं माङ्गल्यर्णकर्माङ्गं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुमानशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिघ्नन् प्रतिपादयिष्ये. गृणोमि दत्ताकं सुदकं शर्मा इदमापस्यवा शुतमा शान्ता शततमा शुभा शुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यमा मेद्या मेद्यमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं एते शतं वरुणये सहस्रं विघ्निया पाठा पुरुत्रा विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्चन्द्रमर्दस्वत्यान्. तरके पाञ्चभौतिकमवाहयामि जलेवरमवाहयामि पचेत्समवाहयामि रक्तान्मृतमवाहयामि परस्त्रिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वाक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं
उमाग्नेयोगस्माद्विजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितोऽनुशम्भो वैराजन्ते स्वनिदत्तां प्रैषामदेशवदानामनादिः यामे शस्तां दलितां दधातो पद्माकारमण्डले वंशक्षरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि उत्पत्तिं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनागर्वः इदमासनं विश्वक्षेनागर्वः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणागर्वः विश्वक्सेनागर्वः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व प्रसिद्ध प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तवापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तवापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तवापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानुदते पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो वदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं वत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्ये माक्षुर्यत्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्टुवाकं सस्तनोभिर्विषेमदेवगितं गदागहो वदमिन्नु सरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रा सो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीरिषता गुर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदित्यं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेत भग्विषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यत् सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्याम् अस्यां सुगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्तवस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्राणानागम्याम् अस्यां जुगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति रध्यास्महव्ये नमसो मसद्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नो अस्तु अनुराधान विषावर्धगन्तः वदञ्जीवमरुदस्सवीराः प्राणानागम्या अस्यां भ्रुवतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामगापवस्थानभूज्ये दधातना आपो जनगता जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता सपुनातमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तमनबोधिकां पुनन्त विश्व आगमः तदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत अग्ने कृत्वा क्रतुगुं नृणो यत्ते पवित्रमक्षुषे अग्ने विदमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वै स्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै भक्वे स्तनवो वीतपुष्टाः तया समाद्येषो वयज्ञस्यामदगौरगीनां वै स्वानरसविर्मा पुनातो पादप्राणेने शिरोमगोभूः त्या वा पृथिवी पयसा पयोभिः वृतावरे यज्ञे मा पुनीतां प्रगद्भिः सविदस्त्रभिः वरजिष्टैर्देवमुन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येति त्रिविसम्प्रतकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति सवितं मातरिष्वणां पवमानीर्यो अद्येति त्रिविसम्प्रतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी
पवमाने स्वस्यगने कृतगाहे पयस्वते ऋषभिसंवृतोर्जः ब्राह्मणे शमदकं विदं पवमाने दिशन्तरः इमं लोकमदो अवं कामान् समद्दगन्तरः देवे देवै समावृताः पवमाने स्वस्यगने कृतगाहे कृतश्चिदः ऋषभिसंवृतोर्जः ब्राह्मणे शमदकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभगं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सगमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिप्रातमां तदवेदामोद्दगं ज्ञापनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां दिशिदेवार्तचोमाद्यगन्तां दक्षिणागां दिशिमाशाः पितरोमाद्यगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रशा पशवोमाद्यगन्तामुदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो माद्यगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञवधर्माद्यगन्ताम् अदोधराधरेर्नागेभ्यो माद्यगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहागां नियतो सृजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समितः सप्त जिह्वान् सप्त इमे लोका यरुचरन्ति प्राणा गुहासगां नियताः सप्त सप्त अतः समुद्राकरयश्च सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा करुणागिर्मः विश्वक्सेनागिर्मः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचरणीयं समर्पयामि यदा सुखं यथा स्तनं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च மந்திவாய் வடவேங்கட மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத் தரவினையான் அந்தி போல் நிறத்தாடையும் அதன் மேல் அயனை படைத்ததோர் எழில் உந்தி உந்தி மேலதன்றோ அடியேன் உள்ளத்து நுயிரே. வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றானாம் அரங்கத்து அரவினையான். அரங்கத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவன்தான் ஒரு காலத்தில் திருவேங்கடமலையிலே வானவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நித்திய சூரிகள் பூஜிக்க ஆராதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கின்றான். எவ்வளவு ஒரு நின்ற வண்ணமாக இருக்கக்கூடிய நெடியோன் குன்றம் என்று நம்முடைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் இந்த திருவேங்கடமுடையானை போற்றக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. நித்திய உற்சவங்கள் நீங்கள் காண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலத்திற்கு மட்டுமே எழுந்தருள வேண்டும். நாள் உற்சவங்கள், மாத உற்சவங்கள், பட்ச உற்சவங்கள், 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை நடக்கக்கூடிய உற்சவங்கள், வருடாந்திர உற்சவங்கள் என்று தொடர்ந்து உற்சவங்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு திவ்ய திருத்தலம் எது என்று சொன்னால் அது திருவேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திவ்ய திருத்தலம். இந்த திவ்ய திருத்தலம் எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அழகாக வேதாந்த தேசிகர் மிக தெளிவுபட கூறக்கூடியவராக இருக்கின்றார். ஏற்றமளவும் ஏறலாம்படி இருக்கின்ற திருமலை ஆழ்வான். மலைக்கு எவ்வளவு ஏற்றம், எம்பெருமானுக்கும் அவ்வளவு ஏற்றம். இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஏற்றம்தான். மலருக்கு ஏற்றம், அங்கே வாழக்கூடிய குருகுக்கு ஏற்றம், அங்கே இருக்கக்கூடிய படிக்கு ஏற்றம், அங்கே இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்களுக்கு ஏற்றம். இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அது எம்பெருமானுடைய சொரூபமாக இருக்கின்றது என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் சொல்லி வைத்த ஒரு திவ்ய திருத்தலம் எதுவென்று சொன்னால் அது திருவேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிந்துப்பூ மகிழும் திருவேங்கடம். அந்த திருவேங்கடம் எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் மலர்களெல்லாம் மலர்ந்து எம்பெருமானுக்கு சேவை செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றனவாம். அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கடம் தான் புஷ்ப மண்டபம் என்று நம்முடைய பூர்வர்கள் எல்லாம் போற்றினார்கள். ஏன் புஷ்ப மண்டபம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இங்கே
அனந்தாச்சாரியார் என்கின்ற அவர் இந்த ஓம் ஷன்னோனிதத்தாம் தபதோதிகர்த்தாம் ஸ்வயம் புரக்ரே முதகே மிருதாகாம் சகலவாஹயாமி சாஸ்திரி கமவாஹயாமி இடந்தமவாஹயாமி நாகரதமவாஹயாமி சேஷாகரமஹாதிரமாசனம் சேஷாகரமஹ பாத்யம் சமர்ப்பயாமி யஜ்ஞம் சமர்ப்பயாமி ஆஜமனியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாகரமஹ புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாகரமஹ குடோபஹாரம் நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி ஓம் ஸ்வஸ்தினாமேதாமஸ்வினா பகஸ்வஸ்தி தேவேந்திரநர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசுரோதசாதனः ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவி சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தகே அயப்ருவாமஹை சோமம் வஸ்தி புவனஸ்ய கஸ்பதிः பிரகஸ்பதிம் சர்வகணம் ஸ்வஸ்தகே ஸ்வஸ்தக ஆதித்யாசோ பவந்து நः விஸ்வே தேவானோ அத்யா ஸ்வஸ்தகே வைஸ்வானரோ வசுரக்னிः ஸ்வஸ்தகே தேவா அவந்திரபவ ஸ்வஸ்தகே ஸ்வஸ்தினோ ருத்ரபாத்தம் ஹாசः ஸ்வஸ்திமித்ராவருணா स्वस्ति रेवती स्वस्ति नगेन्द्रस्याग्निस्तनोदिते कृते स्वस्ति बन्धामनुजरेम सूर्याचन्दपसा विवा पुनर्दताज्ञता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तगनं तार्क्षमैष्णने महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसकं समत्स्व बृहद्यसो नवविवारुहेम अं होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्षं प्रयतपानिशरणं प्रपद्येषु भादेशभगन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. பகவான் இந்த இடத்தில் அவன் அனைவருக்கும் அருளை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். அதனால்தான் தேவர்கள் எல்லாம் வணங்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்பது ஏற்றம். தேவர்கள் என்று சொன்னால் நித்தியசூரிகள், எப்பொழுதுமே ஒளிமயமாக இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கின்றார்களாம். ஏனென்றால் அவன் வைகுண்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் வணங்கக்கூடியவனாக இருந்தான். வைகுண்டத்திலிருந்து மறுபடியும் இந்த திருவேங்கடமலையிலே அவனுடைய பாதங்களை தாழ்த்தினான். இங்கே வந்து நின்றானாம். இங்கு நின்று அந்த நின்ற துயரத்தை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திருவரங்கத்திற்கு சென்று பள்ளி கொண்டானாம். வைகுண்டநாதனும் இவன்தான். திருவேங்கடத்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த எம்பெருமான் தான் இப்பொழுது திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டிருக்கின்றான். எம்பெருமான் ஒவ்வொரு திவ்ய திருத்தலத்திலே ஒவ்வொரு தோற்றப்பொழிவாக இருந்தாலும் அவன் ஸ்ரீமன் நாராயணனாகவே இருக்கின்றான். திருவேங்கடமுடையானவனாக இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். அப்படிப்பட்டவன் வைகுண்டத்திலிருந்து எப்படி வந்தான் இந்த திருவேங்கட மலைக்கு என்பதற்காக திருப்பாணாழ்வார் மிக அழகாக பாசுரமிட்டிருக்கின்றார். அமலனாதிபிரான் அடியார்க்கென்னை ஆட்படுத்திய விமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார் பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நேல்மதில் அரங்கத்தம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினில் ஒக்கின்றதே. பாதங்கள் எப்படி இருக்கான்? கமலங்களை போன்று மலர்ந்திருக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. பாதங்களை தரிசித்தாலே நம்முடைய பாபங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும். அவனுடைய பாதங்கள் தானே அனைவருக்கும் வீடு பேரை கொடுத்த பாதங்களாக இருக்கின்றன. அதனால்தான் அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பியும் உதவுவதில்லை என்று சொல்வார்கள். அந்த அடி என்பது எது? எம்பெருமானுடைய திருவடி. உற்றார் உணைவர்கள் அனைவருமாக கைவிட்டாலும் கூட எம்பெருமான் அவனுடைய திருவடிகளாலே ஆட்கொள்ளச் செய்யக்கூடியவனாக இருக்கின்றானாம். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு இதோ இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே நித்திய உற்சவமாக திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தேறிக்கொண்டு இருக்கின்றது. இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே எம்பெருமான் அவன் நித்திய யவ்வனனாக காட்சி கொடுக்கின்றான். நித்திய யவ்வனம் எப்படி வருகின்றது? அலங்கார பிரியனாக இருக்கின்றான். பட்டு வஸ்திரங்களை அணிந்திருக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். ஆபரணங்களுக்கு பொலிவை தரக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். மலர்களிலே அவனுடைய மனம் நிறைந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இப்படி அந்த திவ்ய திருத்தலமாகப்பட்டது எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் 5 பூதங்களிலும் ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ வெங்கடேசாய என்கின்ற அந்த மந்திரங்கள் ஒலித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடமாகத்தான் இந்த திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலம் இயற்கை பொங்க அழகான தோற்றப்பொழிவோடு ஸ்ரீதேவி பூதேவி உடனுரையக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் எம்பெருமான். அப்படிப்பட்டவனுடைய அந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை நாம் நேரடியாக காணக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தினுடைய பக்தி சேனல் நமக்கு அருளியிருக்கின்றது. பக்தர்கள் எல்லாம் அவருடைய திருமாளிகள் எழுந்தருளி
நாள்தோறும் இந்த நிகழ்வை காணலாம். இப்படிப்பட்ட நிகழ்வை காணும் பொழுதுதான் நமக்குள்ளே ஒரு ஆன்மீக உணர்வு, நம்முடைய குழந்தைகளுக்குள்ளே ஒரு ஆன்மீக உணர்வு, தவறான வழிகளை தவர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு பக்குவமான மனநிலை, ஒரு பகுத்தறிவு தன்மையை விட்டெறிந்து ஆன்மீகத்தில் நாம் ஏற்றமுடையவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. அதே போன்றுதான் எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன் என்கின்ற அறிந்து ஆராயக்கூடிய அறிவினை பெறக்கூடிய ஒரு நிலை என்பது நமக்கு இந்த திருக்கல்யாண உற்சவங்களின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதோ பாருங்கள், இந்த இப்பொழுது அந்த அர்ச்சக சுவாமிகள் அங்கே திருக்காப்பு நிகழ்வை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றார். இந்த காப்பு கட்டுதல் என்கின்ற அந்த நிகழ்வு ஏன் என்று சொன்னால், எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும், எந்த விழாவாக இருந்தாலும், எந்த உற்சவமாக இருந்தாலும் அது செவ்வனே நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக திருக்காப்பு, அந்த திருக்காப்பு என்பது பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. எவ்வளவு அழகான தமிழ் சொற்கள்! அந்த பாதுகாப்பு என்பது திருக்காப்பாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. எல்லாவற்றிற்கும் திரு என்கின்ற ஒரு சொல்லை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நம்முடைய தமிழ் மொழிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தனித்துவம். எங்கெல்லாம் திரு என்கின்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றதோ அங்கே எம்பெருமான் குடிகொண்டிருக்கின்றான். எம்பெருமானுடைய ஆற்றல் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எம்பெருமானுடைய எழில் பொங்கும் தன்மை அந்த இடத்தில் இயற்கையில் பொங்கி நிறைந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எல்லா விதமான அருளாகப்பட்டது கிடைக்கும் என்பது உண்மையான ஒன்றாகத்தான் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நாள்தோறும் நடக்கக்கூடிய இந்த உற்சவத்திலே பக்தர்கள் கோடான கோடி பக்தர்கள் அருளை பெறக்கூடிய ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் சுத்தைர்க்தைர்வா விருத்தாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் நமத்தோ இந்திர சுத்தோ நாகஹி சுத்த சுத்தாவிரூதிபிஹி சுத்தோ ரகிம் விதாரிகா சுத்தோ மத்திய சௌம்யஹ மகி தேவா திருணமாகஜந்தாம் மய்யாஷீரஸ்தோ மகி தேவஹூதிஹி दैव्या होतारावणितपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः होद्दन्यमानमस्य अमेद्यं पपात्मानमजमानस्सगन्तो शिवानुचन्नो माता पृथिवीतोकसाता तत्सवतर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् जातवेदो भुवनस्य रेतिनिर्वचो गज्जनिष्यते आग्नेमश्वत्तादिहव्यागं समीगर्भाज्जनगन्यो मयो भूः घृतप्रतीको घृतगाणिरग्नेर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्ता जगतो वहन्ते घृतं पिबन् सिगजा यक्षिदेवान् अनुतेरमन्यस्वान् सहस्तेरमन्यस्वान् देवसवितप्तसुवान् तत्सर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतस्सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्यापमास्य विष्टाश्चनुश्चिवः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजाजमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो भेनगं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं वितत्यगं सभेयं पितस्त्रवणं यो ददातु तस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनाकं सुकृताङ्गित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादवमादाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अंतरिक्षागत्वा पृथिव्यै पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां प्रसन्त्वा स्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि तदा विष्णुमवाहयामि व्यापिणानमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यो छन्दस्व
ब्रह्मण्णव प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमाप प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवता वर्धयत्तन्नागस्तपृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतान्मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहि ॐ प्रणग प्रणयत्वापो देवी प्रणगं सुखं सा जगन्तनः संबिडन्तां मृडपात्रान् देवगज्यागी दक्षिणप्रणदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजामवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोनवाहयामि मर्तमवाहयामि द्रोणवाहयामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षदे सोमवाहयामि औपासर्यमवाहयामि विश्वान् देवान् सर्वदेवान् अवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मणेष्णरभामि इन्द्रायष्णरभामि वसभ्योष्णरभामि मरुद्भ्योष्णरभामि रुद्रेभ्योष्णरभामि अप उपस्पृश्यां श्रीविष्णुरभामि प्रस्तेष्णरभामि पित्रायष्णरभामि वरुणायष्णरभामि आदित्येभ्योष्णरभामि असभ्यां दुष्णरभामि पूष्णेष्णरभामि कक्षायष्णरभामि सोमायष्णरभामि औपासज्ञष्णरभामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वदेवेभ्योष्णरभामि आज्यं तृप्पदश्रयामि चरं तृप्पदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिध समिध स्वाहा अमृतमशिवारणमसि अन्तदकं वक्ष अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः चित्पदे स्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पदे स्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्था सेवितापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पृशयित्वा अभ्यर्च अक्षता आज्य चिरुभिः इमामे अग्नैष्टकाभ्यनवः सन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निवर्तये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः सहोदसे नमः अजराप्रवे नमः मर्यापसे नमः पङ्क्तिरासे नमः यज्ञपुरुषाय नमः अवतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुभा ॐ अयन्तयत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यः समर्थस्व हेत्भवद्गतास्मानमसयावसंवत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याचलं सावित्रा गृहीत्वा जुग्भाव्यावते ज्योति ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अवतेरमग्रस्ता सहस्तिरमग्रस्ता देवसवितः प्रासाभिः प्राणानागम्यां अस्यां भूतो सिंहस्वनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघारान्ते सरलावे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे सवदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुभान् ॐ अतो देवा अवन्तनागत विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानुदे पदं सवोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्मानुधारकन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रस्तुतगतो अवस्तुते इन्द्रस्य गज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवचक्षुरायुतज्ञ स्वाहा तद्यप्रासो पण्डवो जाग्रवाकं वसमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अवतेरमग्रस्ता देवसवितः प्रासाभिः సతి నీకు నమరే అటు
అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే. సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక, చలముల నూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక, పతితో కెలయుచుకేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ, కిలకిల పతితో కెలయుచుకేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే. రామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజగేహమా మోద ప్రమోద ఆనందః సుమంగళీరిగం భజోరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్మై దత్వాగాధాస్తం విపరేతన యమాన్ తమింద్రమేద్వస్సుపుత్రాగం సుభగాంకురో తుసాస్యాన్ పుత్రానాదేహి పతిమేకాదశం కృధి. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రతిశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ప్రథమ్యప్తే చ వాయురాకాశమదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాతండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి త్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వరుణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనే కృదిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రూంజకసాల్మరీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సుదృక్షవద్వింధ్య పారిజాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాకిణౌ వర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే
दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्र सममुद्रेकायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ मम अनेक जन्मसु इगजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु प्रकसे प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्तक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्गात कालसूत्रविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमचरात्राप्तोर्याम सान्त्वन वाजपेय पौण्डरीकाश्रमसकृतो पुण्यबलाभाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चित्रमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वदिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलबलाभाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्य कौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि द्विपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकान्तभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशयप्रपरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशयप्रपरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशयप्रपरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशयप्रपरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्यशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय स्वर्णनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय भार्गवच्यवन आप्नुमान और वेदल पंचानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगो संकल्पतनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सारणै द्विवत्तयानुषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकलसुरांगना संसरित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौन्दर्यवतीं मघोश्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां विष्टवेतव्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां सलङ्कृतां सात्वीं शीलागतमेधसे प्रयतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवतां इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। பகவான்
அவனுடைய அந்த திவ்ய க்ஷேத்திரத்தினுடைய சிறப்பையெல்லாம் மந்திர உபதேசமாக இந்த சுவாமிகள் சொன்னதை கேட்டால் பிரம்மாண்ட நாயக்கனாக இருக்கின்றான். நிஜ அவதாராய, நிஜமாகவே சுயம்புவாகவே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான். குளிர்ச்சியான இந்த திருவேங்கட மலையிலே மந்திபாய் வடவேங்கட மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத்து அரவினையான். அந்திபோல் நிறத்தாடையும் அதன் மேல் அயனை படைத்ததோர் எழில் உந்தியாம். அயனுக்கு பிரம்மாவுக்கு பிறப்பை கொடுத்தவன் எம்பெருமான். 4 வேதங்களுக்குள்ளே அவன் அர்த்தப்பொருளாக இருக்கின்றான். இதோ இந்த திருமாங்கல்யங்கள்தான் லோகத்திற்கெல்லாம் க்ஷேமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய திருமாங்கல்யங்கள். இந்த திருமாங்கல்யங்களை பார்த்து சேவியுங்கள். இவற்றை சேவித்தாலே நம்முடைய ஆயுள் கூடும், ஐஸ்வர்யம் கூடும், குடும்பத்தில் நல்ல உறவு என்பது ஏற்படும். அந்த நல்ல உறவுக்கு காரணம் திருக்கல்யாண உற்சவங்கள் தான். பக்தர்கள் மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும். எங்கெல்லாம் சிக்கல் வருகின்றதோ அந்த சிக்கலை தவிர்த்து வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் எம்பெருமான் தான் அதற்கு மூலப்பொருளாக இருக்கின்றான். சிக்கலை தீர்த்து வைக்கக்கூடியவனாக அவன் இருக்கின்றான். தாம்பத்தியத்திலே மேன்மையான ஒரு நிலை, இல்லறத்திலே ஒரு மேன்மையான ஒரு ஈடுபாடு, இவற்றிற்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காரணபூதனாக இருக்கின்றான் திருவேங்கடமுடையான். திருவேங்கடமுடையானுடைய நாமத்தை நாம் உச்சரித்தாலே, அவனுடைய நாமத்தை நாம் கேட்டாலே, அவனுடைய நாமத்தை நாம் அக்ஷரங்களாலே எழுதினாலே நமக்கு எல்லா விதமான அருளும் கிட்டும். அதனால்தான் வேங்கடம் என்று சொன்னாலே பாபங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடுமாம். வேங்கடம் என்று சொன்னாலே பொலிவு என்பது தானாக வந்து விடுமாம். வேங்கடம் என்று சொன்னாலே செல்வம் தானாக பெருகி விடுமாம். அதனால் தான் வேங்கடம் வேங்கடேசாய நமகா என்கின்ற அந்த திருமந்திரங்களை சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் எல்லாம் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தருளி எம்பெருமானிடத்திலே படியாய் கிடந்து அவன் பவளவாய் காண்பேனே என்று ஆழ்வார்கள் சொன்னதைப் போன்று இங்கே படியாய் கிடந்திருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். பகவத் ராமானுஜர் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தருளி இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுக்கு எவ்வளவு கைங்கரியங்களை செய்தார். அவருடைய கைங்கரியங்கள் தான் இன்றைக்கு இந்த திவ்ய திருத்தலம் இந்த அளவுக்கு பொலிவாக இருக்கக்கூடியதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது. புஷ்ப கைங்கரியத்திற்கு அவர் காரணமாக இருந்தார். அவருடைய திரு மாமனார் தீர்த்த கைங்கரியத்திற்கு காரணமாக இருந்தார். அவரே இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எம்பெருமானுக்கு சங்கு சக்கரங்களை வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவராக இருந்தார். திருவேங்கடமுடையானுடைய செல்வமெல்லாம் வளருவதற்காக பல மூல மந்திரங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தியவர் அந்த மகானாக இருக்கக்கூடிய பகவத் ராமானுஜர் தான். பகவத் ராமானுஜர் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தருளும் பொழுது தன்னுடைய முழங்காலிட்டு எழுந்தருளினாராம். ஏனென்று சொன்னால் திருமலை ஆழ்வான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மலை எம்பெருமானுக்கு படுக்கையாக இருக்கின்றது. எம்பெருமானுடைய அந்த படுக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷனை நாம் மிதிப்பது என்பது நம்முடைய பாவமாக மாறிவிடும் என்கின்ற பக்தி பரவசத்தினாலே இப்படி ஒரு ஆச்சாரியர் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அதைவிட பெரிய பாக்கியம் வைணவத்திற்கென்பது இல்லை. இதோ இங்கே ஏகாங்க சுவாமிகள் இருக்கின்றார்கள். ஏக அங்கி என்று சொன்னால் ஒரே அங்கியை உடுத்திருக்கக்கூடியவர்கள் தான் ஏகாங்கி என்கின்ற அந்த சொல்லாடலுக்கு பொருளாக இருக்கின்றது. இவர்கள்தான் ஜீயர் சுவாமிகளுடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்றார்கள். சின்ன ஜீயர், பெரிய ஜீயர் என்கின்ற பட்டங்கள் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே அவர்கள்தான் ராமானுஜரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பட்டங்களாக இன்று வரை வலம் வந்து இந்த திவ்ய க்ஷேத்திரத்திலே இருக்கக்கூடிய கைங்கரியங்களுக்கு காரணபூதர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எடுத்து கற்பூர ஆரத்தி கொடுத்தால்தான் எம்பெருமானுக்கு அந்த இடத்தில் ஆரத்தி கொடுக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு நிலை இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு மட்டுமே உரியதாக இருக்கின்றது. எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும், எந்த உற்சவமாக இருந்தாலும், எந்த கைங்கரிய சேவையாக இருந்தாலும் ஜீயர்களை முதன்மைப்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு திவ்ய திருத்தலம் எதுவென்று சொன்னால் அது திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலமாகத்தான் இருக்கின்றது. இவற்றையெல்லாம் பக்தர்களாகிய நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால்
எம்பெருமான் வீற்றிருக்கக்கூடிய திருமலையினுடைய அந்த சௌந்தரிய சோபையை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், இங்கு இருக்கக்கூடிய உற்சவங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் மூலமாக வெளிவரக்கூடிய சப்தகிரி என்கின்ற சமய மாத இதழ் மாதத்திற்கு ஒரு முறை வருகின்றது. அந்த சமய மாத இதழ் தெலுங்கிலும் வருகின்றது, தமிழிலும் வரக்கூடியதாக, சமஸ்கிருதத்திலும் வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது, ஹிந்தியிலும் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது, கன்னடத்திலும் வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இப்படி வெவ்வேறு மொழிகளிலே எம்பெருமானுடைய அந்த செய்திகளை எல்லாம் பரப்பக்கூடிய ஒரு திவ்ய க்ஷூக்தமாக சப்தகிரி என்கின்ற அந்த மாத இதழ் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தினாலே வெளியிடக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதை படித்தாலே எம்பெருமானுடைய எல்லா விதமான கைங்கரியங்களும் எல்லா விதமான கல்யாண குணங்களும் ஆச்சாரியர்கள் ஆழ்வார்களை பற்றிய செய்திகளும் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் அவற்றில் பொதிந்து வரக்கூடிய ஒரு பக்தி பணுவலாகவே அந்த இதழ் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. பக்தர்கள் தேவையானவர்கள் சிறப்பு அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு இந்த புத்தகத்தை பெறலாம் சந்தா கட்டி. அப்படியாக மேன்மையான திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தினுடைய இந்த பக்தி சேனல் மூலமாக தொடர்ந்து நாம் இந்த நிகழ்வுகளை கண்டாலே வெவ்வேறு கோயில்களில் நடக்கக்கூடிய உற்சவங்களை பற்றியும் எம்பெருமானுடைய சிறப்பை பற்றியும் சொற்பொழிவுகளாக, கதைகளாக, திரைப்படங்களாக வெளிவரக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. இவற்றிற்கெல்லாம் மூலாதாரமாக இருக்கக்கூடியது எதுவென்று சொன்னால் அது திருமலை ஒழுகு என்கின்ற ஒரு நூல். அந்த திருமலை ஒழுகு என்கின்ற நூலில்தான் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே ஆதி முதல் இன்று வரை நடக்கக்கூடிய கைங்கரியங்களை பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் மிக அழகாக நம்முடைய முன்னோர்கள் தொகுத்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள். எத்தனை பேர் சேவை சாதித்திருக்கின்றார்கள். அந்த சேவை சாதித்திற்கு காரணம் எம்பெருமான் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, திருவேங்கடவன் மீது இருக்கக்கூடிய தனிப்பற்று என்றே நாம் சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட இதோ இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை பக்தர்கள் மனதார வேண்டி சேவித்து எம்பெருமானுடைய அருளை பெறுங்கள். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. प्रजापतिस्समगं राजा नमसृजता तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु. అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే.
చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యముపాసనాగ్నౌ పదాన హోమం కరిష్యే అదితిరముణ్యస్వ ముదిరముణ్యస్వ స్వస్తిరముణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఓం చిత్తం స్వాహ చిత్తిశ్చ స్వాహ ఆకోదం స్వాహ ఆకోదశ్చ స్వాహ విజ్ఞాతం స్వాహ విజ్ఞానం స్వాహ మనశ్చ స్వాహ షట్పరేశ్చ స్వాహ ద్రఢశ్చ స్వాహ పూర్ణమాచ్చ స్వాహ భగచ్చ స్వాహ అనంతరం స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదితిరమగ్గుస్తాదేవ సవిత ప్రాసాభీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ సునాస్పునః వైవాహిక మహోత్సవన్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ రాజహోమం కరిష్యే అదితిరమన్యస్వ అదితిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదితిరమగ్గుస్తాదేవ సవిత ప్రాసాభీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనాస్వనః వైవాహిక మహోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ రాజహోమాంతే చతుర్థ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవోత్తరఘోష్యే ఉదిరముణ్యస్వ స్వస్తిరముణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఓం అతో దేవా అవంతనాగత విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యాసృతా విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రేణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః तो धर्माधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो वदनस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्तका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वक्षराजतज्ञ स्वाहा तद्विप्रासाविपन्यवो जाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अनुतेनमग्रस्ता स्वस्तेनमग्रस्ता देवसवित प्रासाभीः प्राणानागम्याम् अस्यां शोतो श्री श्रीनास्वनः महोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ क्रमसाद्गुण्यार्थमुपृष्टान्तो होमं करिष्ये अदितिरमुण्यस्व अनुतेनमुण्यस्व स्वस्तिरमुण्यस्व देवसवित प्रसव ओमिदस्कणोत्रिज्वान् महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदोष्मै स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेद वचर्षणि स्वाहा पुनर्ग्निचक्षुरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्रां चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वृदनष्टेभ्य स्वाहा वेषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा प्रद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो ओषधिक्षेमगे स्वाहा
समिदसि तेजोचिते जोमगिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाग स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाग स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाग स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्तजग्मा सप्तषडगः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सुधास्वागदन्ते सप्तगोणीना प्रणस्व तेन स्वाहा सुदान विप्तान नष्टप्रतेन पूर्णमावतिञ्जहामि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहामि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तुप्यन्ताम् अवतेनमग्गस्ता स्वस्तिरमग्गस्ता देवसवितप्रासावि दक्षिण उत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यथा सकं यथास्तां प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच्छामि पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सुदर्शनं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षतमक्षत्ये जहोमि अक्षतसममे क्षेष्टाः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिद्योपनगां दक्षिणतः परिद्योपनगाम् उत्तरतः परिद्योपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जहोति देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाकुशं यद्देवानां त्रयाकुशं तन्मे अस्तत्रयाकुशं दीर्घागत्वागा फलागा शतागा सतं च वर्चसे त्रयाकुशं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अद्यमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाकुशं यद्देवानां त्रयाकुशं तन्मे अस्तु त्रयाकुशं दीर्घागत्वागा बलागा सुतागा सतं च वर्तसे त्रयाकुशम् आपोकृष्टामगापुगस्तानभूत्ये सातना महेरणाय चक्षसे व्यवस्यतमोरसस्य वाचकते गणः उदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोगस्य क्षयागसिन्मता आपो जनयता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते राहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूया संयत्ते अग्ने परस्ते नाहं परस्वी भूयासं मयिमेदां मयप्रदां मयज्ञेस्तेजोदां मयिमेदां मयप्रदां मयेन्द्रियन्द्रियं ददातु मयिमेदां मयप्रदां मयिसूर्यो भ्राजो ददातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उपासना यत्कृतमयादेव परिपूर्णं तदस्ते प्रायश्चित्तानि ईशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेत् समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाकर्मः पुनः पाद्यं पुनरार्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच्छामि अग्ने नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छामि
तत्स ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. பகவான் அவன் இந்த லோகத்தில் எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்தை திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலத்திலே மூலப்புருஷனாக இருந்து கொண்டு கண்டுகளிக்கக்கூடிய அந்த நிலை பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அருளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்றிர் பூரண புற்குடமேந்தி புறமெங்கும் தோரணம் கட்ட கனா கண்டேன் தோழினான் என்று ஆண்டாள் பிராட்டி இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை பற்றி கனா காண்பதை போன்று மிக அழகாக பாசுரமிட்டிருக்கின்றான். அந்த நிகழ்வை வெளிப்படுத்தும் வண்ணமாகத்தான் இதோ இந்த திருத்தேங்காய்கள் உருட்டக்கூடிய ஒரு நிலை. பழைய சாம்பிரதாயத்தில் நம்முடைய உற்சவங்கள், நம்முடைய மக்கள் பின்பற்றிய ஒரு நிலைப்பாடு அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவற்றுக்கு சான்றாக இருக்கக்கூடியது எதுவென்று சொன்னால் அது திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலத்திலே நடக்கக்கூடிய உற்சவங்கள் தான். ஒவ்வொரு உற்சவமும் நம்முடைய பழைய சான்றாண்மைக்கு காரணமாக விளங்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. இதோ இந்த தோல் மாலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அழகிய மாலையை பாருங்கள், எவ்வளவு அழகாக பூத்திருக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. ஆண்டாலும் பெரிய ஆழ்வாரும் அன்று தொடுத்த மாலையை போன்றல்லவா இந்த மாலைகள் இருக்கின்றன. இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார் அவர்களுடைய திருத்தோளுக்கு இனிதாகி மறுபடியும் எம்பெருமானுக்கு சாற்றப்படும் பொழுது அங்கே எம்பெருமானுடைய புன்முறுவல் அழகாக தென்படுவதை நாம் காணலாம், உணரலாம். அதுதான் எம்பெருமானுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்றம். அவன்தான் அலங்கார பிரியனாக இருக்கின்றான். மலர் மாலைகள் எப்பொழுதும் சூடிக்கொண்டு, ஆபரணங்களை சூடிக்கொண்டு, பட்டு வஸ்திரங்களை சூடிக்கொண்டு நமக்கெல்லாம் புத்துணர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவனாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் இதற்கெல்லாம் காரணம் அவன் நித்திய யவனனாக இருப்பதுதான். அந்த நித்திய யவனம் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அது பிராட்டியினுடைய சம்பந்தம்தான். திருமார்பிலே நாச்சியார் இருப்பது ஒரு வகையில் அவனுக்கு சம்பந்தம் என்று சொன்னாலும் அவனை இயக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த பிராட்டிக்கு தான் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுடைய இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பூர்வ ஜன்ம சுக்ருதம் இருந்தால் மட்டுமே அது முடியும் என்பது உண்மை. அப்படிப்பட்ட பூர்வ ஜன்ம சுக்ருதம் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் நேரடியாக இன்று எம்பெருமானை காணக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். எவ்வளவு பக்தி பரவசம்! எல்லாவற்றையும் மறந்து எம்பெருமானுடைய அந்த அவனுடைய திருநாமத்தின் மீதும் அவனுடைய உருவத்தின் மீதும் முழுமையாக பற்று வைத்து கொண்டு இப்படி அவனை சதி சமேதமாக கண்டு கழிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் பூர்வ ஜன்ம சுக்ருதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. மறுபடியும் எப்பொழுது வந்து சேவிப்போம் என்கின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் வகையில் இந்த திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்து நிறைவேறுகின்றது. பக்தர்கள் எல்லாம் கண்டுகளித்து எல்லா அருளையும் பெற வேண்டும். ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు,
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.